हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्टार्ट करवा गोटे न्यू सब्जेक्ट एग्रीकल्चर सर कहार ना ओपीएससी यूपीएससी मेन एग्जाम रो एग्रीकल्चर आमर जीएसए 3 रो अछि प्रति वर्ष 40 रु 50 मार्क क्वेश्चन एठू आसे हैला इकोनॉमी सह ये डायरेक्ट लिंक करूची ओके तो ट्रस्ट मी एग्रीकल्चर को आमे मात्र 8 रु 10 घंटा रे कवर करवा एंड ट्रस्ट मी कि तोर गोटिए भी क्वेश्चन मिस होबनी एग्रीकल्चर रो हैला एटी जिनिस कोन होची कि बाकी इंस्टीट्यूट भलिया एठी आमे ताको 14 माने सॉरी 40 घंटा 42 घंटा 50 घंटा एमिति ताको लंबेइबानी आवश्यक नाही 8 10 घंटा सफिशिएंट जेमिति कि लिखा है इरिगेशन ऊपर कौन ना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जदि मु तुमको केवल डाटा देबी या ऊपर ताले कौन 15 मिनिट मोर देन सफिशिएंट एबे किछि अछंती इंस्टीट्यूट से कोन करिवे तुमको आपण गप पढेबे कि एबे अछंती प्राइम मिनिस्टर ता पूर्व प्राइम मिनिस्टर किए कोन करप्शन कला को एरिया रे कोन इरिगेशन हे पारलानी को एरिया रे हेई तो गला भीतर कोन लोकल एमएलए खेल गला कोन एमपी खेल गला तो ये सब आवश्यक नाही हैला एठी कोन रोल प्ले कले ब्यूरोक्रेट्स जति हां जति कि एग्जाम पे दरकार हम सेति पढिबा ओके ट्रस्ट मी एग्रीकल्चर को बहुत भलो से डील करबा हैला कम समय रे सो स्टार्ट करबा गुरु मु कहि रखे हम कोन पढिबा ना प्रथमे बेसिक पढिबा बेसिक पढिला परे देन कोन करबा ना हमर जो स्टैंडर्ड नोट्स अछि मु एठी आनिबी ए लेक्चर रे हम ताकू देखिबा देन को करबा हमर पीवाईक्यू करबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करबा सेति रख डाटा मोर देन सफिशिएंट हैला तो एग्रीकल्चर रो जदि मु कहिबी कि जेतेबेले आमे गोटे पर्टिकुलर मेटी क्रॉपर ना नेबे हैला से राइस हो किबा व्हीट हो किबा किछि गोटे तमे एठी वेजिटेबल ना नियो सब किछि पाए ना प्रथमे कोन जेतेबेले हम चाष होउची भाबो टिके बहुत बेसी पड़ जामे ता पे किछि इनपुट दरकार होउची होय नै किछि इनपुट से हमर जदि मु राइस कथा कहिबी राइस पाइबी गोटे लैंड दरकार गोटे इरिगेशन दरकार सीड्स आवश्यक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ये सब आवश्यक नहीं बिल्कुल आवश्यक एठी मैं तुम पूरा सिलेबस टा कोन करूजी खाली एटा को घुसनी खाली देखो होला पूरा सिलेबस टा तुमको क्वेश्चन मेन रे कोन कोन पचारिबो को एरिया रे पचारिबो मु तुमको सेही टाइट कहूजी मु त माने ए सब जिनिस हला परे हमर कोन होची ना हमर राइस टा होची चाष होची तो ए जो चाष होची ता परे हम कोन करी फाइनली ना हम ताको हार्वेस्ट करूचे एंड ताको हम ट्रांसपोर्ट करूचे फसल को काटू जामे नहीं तापर जो माने निजे खाଇବା କରୁଛନ୍ତି ନିଜର पर्सनल कंजम्पशन ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଘରେ ଷ୍ଟୋର କଲେ ରଖିଦେଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଖାଇବି ବର୍ଷ ସାରା ଯେଉଁ ମାନେ ବେପାର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହା ପାଖରେ ସରପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ତାକୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ସେ ବାହାରେ ବିକି ଦିଅନ୍ତି ହଁ ନାହିଁ ତ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସମୟରେ ବି ଆମର କିଛି ଇସ୍ୟୁସ୍ ଅଛି ହେଲା ଯେମିତିକି ଆମର ଇନପୁଟରେ ବି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ତାକୁ ଦେଖେଇ ମୁଁ ଭଲସେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟରେ ବି ଆମର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ତ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି जदि मु कहबी सपोज ताकू तमे ट्रांसपोर्ट कर देलो एबे हमर का गवर्नमेंट नहीं गला कि कोनोसी गोटे गोटे प्राइवेट प्लेयर नहीं गला जदि से नहीं गला ताकू से कोन करबो ना ताकू से स्टोरेज करबो तो स्टोरेज कला बाले भी इशू अछि हमरो हैला स्टोरेज कर साला पर से कोन करबो फाइनली कोन होत को आमे को जे गोटे चाष को हम काई करंती अल्टीमेटली आमे ताकू लोकन के पाखरे पहुंचेबा होय नै तो स्टोरेज कर साला परे जते बेले फाइनली मु कहबी ना सेही माने हम कोन करंती ना हमरो से सब जिन आमर एपीएमसी मंडी पड़ेब आ मंडी रे सेल हम से अल्टीमेटली सी लोक पाखे पहुँचब जिनसा आ कौन कह प्रथम इनपुट दिज्व तापर फसल हम तापर हार्वेस्ट कर ट्रांसपोर्ट कर स्टोर कर जगार तापर से मंडी को पठाଯିव एंड से लोक मान पाखक पहुँचा एतिक जिनस एतिक भितर आमर एग्रीकल्चर शेष एठी क्वेश्चन कोन कोन पचारे को एरिया रू क्वेश्चन पचारे मु कहबी जदि मु इनपुट कथा कहबी पिले मन रख इनपुट रे प्रथमे कोन दरकार लैंड दरकार हो नै जदि खाली लैंड अछि तो लैंड से हमर इरिगेशन दरकार पानी दरकार बिना पानी रे चाष होबो के होबनी ता पे बेटर सीड्स दरकार हैला जो मंजी कोहंती तापर फर्टिलाइजर तापर पेस्टिसाइड हमर ए सब आवश्यक हैला मु गोटे गोटे कहूची तो लैंड रू क्वेश्चन कोन पचारे यूपीएससी बा यूपीएससी मेन रे लैंड रो क्वेश्चन पचार दो तुमको या तो लैंड रिफॉर्म ऊपर कह मते हैला बहुत भल गोटे गोटे लास्ट बहुत भल से पढ़ेबी किबा पढ़ी देबो कि डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड ऊपर कि लैंड रिकॉर्ड को पेपर वर्क न हो हम ताको डिजिटाइज करबा किबा लैंड डिग्रेडेशन हैला हमर जो मूर्ति क्षय होजी हम ताको केदे बंचेबा किबा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वर्सेस लैंड साइज ताको नै करे क्वेश्चन एवरी ईयर पचार लैंड ऊपर होला सही भलिया
ଯଦି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କହିବି ଇରିଗେସନ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିବ? ଇରିଗେସନ ଉପରେ ବେସିକାଲି ସେ ପଚାରି ଦିଏ କି ପ୍ରଥମେ କୁହ କି ଆମର ୱାଟର ୟୁଜ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି କେମିତି ହେବ? ଯୋଉ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଆମର ଦେଖିବା ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ, ମାକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ହେଲା। ଯୋଉଠି ପାଣି ଯାଉନି ସେଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତା ପାଇଁ ସ୍କିମ୍ ଅଣାଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା, ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଆମର ଡିପ୍ରେସନ ହେଉଛି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆମର ଯୋଉ ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା, ହ୍ୱିଟ୍ ହେଇଗଲା, ସୁଗାର କେନ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇସବୁ କ'ଣ ଏଇସବୁ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯୋଉଠି ୱାଟରର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ଫସଲ କ'ଣ ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଆମର ଅଧିକା ଡିପ୍ରେସନ ହୁଏ। ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଆମେ କ'ଣ ଚାଷ ବନ୍ଦ କରିଦେବା? ଆନ୍ସର ନୋ। ଚାଷ ତ ହେବ, କେମିତି କରିବା? ବେଟର ୱେ କ'ଣ ଫଲୋ କରିବା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ସିଡ୍ସ ଉପରେ ହାଲାକି ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବନି, ଆମେ ହାଲକା କ'ଣ ଆମର ନଲେଜ ନେବା ଆମର କ'ଣ ନା ଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ଉପରେ, ଜିଏମ୍ କ୍ରପ୍ସ ହେଲା ଯାହା ଆମର କରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଜିଏମ୍ କ୍ରପ୍ସ ଆମେ ତା ଉପରେ ନେବା। ତାପରେ କ'ଣ ନା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ ସିଡ୍ସ ହେଲା ସେଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସିଡ୍ସ ଉପରେ। ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ୟୁପିଏସସି ଭଲସେ ପଚାରୁଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ସବସିଡି ତା ଉପରେ ହେଲା। ଏନପିକେ ଇନବାଲାନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଯଦି କହିବା କ'ଣ ସେ ବେସିକାଲି ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ନା କ'ଣ ମାନେ ଦେଖିବ ତମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଚାଷ କରୁଛ ନା, ତମେ ସପୋଜ କହିବ କି ମୋର ପଟାସିୟମ ନେଇ ଆସିବି ହେଲା, ଫସଫରସ ନେଇ ଆସିବି, ଓକେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ନେଇ ଆସିବି, ତ ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ରେସିଓ ଏନପିକେ କେତେ ଅଛି ନା 10:20:30 ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ହେଲା। ତ ସେ ଯଦି ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା ନା ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତ ଏଇଟା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ୟୁପିଏସସି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉଛି ଏବେ, ତାକୁ ଦେଖିବା। ଅର୍ଗାନିକ ଭର୍ସେସ୍ କେମିକାଲ ଫାର୍ମିଂ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି ହେଲା, ସଷ୍ଟେନେବଲ କୋଉଟା ପାଇଁ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଯଦି ଅଧିକା ତମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ତମର ଯୋଉ ଫର୍ଟିଲିଟି ଡାଉନ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ ହେଲା। ତମ ଯୋଉ ଉର୍ବରତା ସେ ନିହାତି ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତ ତମ ଯୋଉ ମାଟି ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସାଲୁଏସନ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଦେବ। ଆମେ ଏଇ ସବୁକୁ ପଢିବା। ତ ମୁଁ କହୁଛି କି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇନପୁଟରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୟୁପିଏସସି ପଚାରୁଛି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଫାଇନାଲି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍, ଯଦି ପୋକ ଫୋକ ଲାଗିଗଲା ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ। ତା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି। ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ଓଭର ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲେ ସେଇଠି କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ହେବ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ କନସର୍ନ ଅଛି, ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏତିକି ସବୁ ଡାଟା ଆମର କ'ଣ ନା ପଚାରିବ ତମର କେବଳ ଇନପୁଟରେ ଯାହା ଅଛି ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଏସନ୍ ସେ ଏଇ ଭିତରେ ପଚାରି ଦିଏ, ବୁଝିଲା। ଯଦି ଏତିକି ହେଇଗଲା ଭାବି ନେବ ତମର 30% ତମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ କ'ଣ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସମୟରେ ଆମର ବେଶୀ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ବେସିକାଲି କ'ଣ ଆମର ଯଦି ହାର୍ଭେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମେକାନାଇଜେସନ ଅଫ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଇସ୍ୟୁ, ମାନେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ମେକାନାଇଜେସନଟା ବହୁତ ଭଲସେ ହେଇପାରେନି। କେମିତି କହିବି ଦେଖ, ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଫାର୍ମର ମାନେ ଦିଆର କ'ଣ ନା ସ୍ମଲ ହୋଲ୍ଡିଂ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବହୁତ ଛୋଟ, ଯୋଉ ଭିତରେ କ'ଣ ଇଜିଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁଲି ପାରୁନଥିବ, ବୁଝିହେଲା। ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ବହୁତ ଭଲସେ ପଢ଼େଇବି। ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଯାହା ପାଖରେ ବି ଅଛି, କାହା ପାଖରେ କ'ଣ ମାନେ ଅଛି ମାନେ କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବି, ସେଇଠି କ'ଣ ନା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ହେବ। ଓକେ, ସବସିଡି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଆମର ଯୋଉ ଲିକେଜେସ୍ କୁହନ୍ତି ନା କରପ୍ସନ୍ ସେଇଠି ପଶି ଆସୁଛି। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କ'ଣ ହାର୍ଭେଷ୍ଟରେ ଏଇସବୁ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଦିଏ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଥା, ଆମେ କ'ଣ ନା ଓଭର ଡିପେଣ୍ଡ ରୁହନ୍ତି ରୋଡ ଉପରେ। ବଟ୍ ଏବେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା କୃଷି ରେଲ କ'ଣ ଆମର ସୁବିଧା ଛାଡ଼ିଥିଲା କୃଷି ରେଲ ଉପରେ, କି ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟଟାକୁ ଇଜିଲି କରିପାରିବା। ତ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ ଦେଖେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ, ବାକି କିଛି ସେମିତି ଖାସ୍ ନାହିଁ କି ଆମର ୟୁପିଏସସି ପଚାରିବ। ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲେ ତମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଷ୍ଟୋରେଜରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ପଚାରେ କ'ଣ କ'ଣ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ତମେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିକି ନେଇ ଆସିଗଲ, ବଟ୍ ତାକୁ ତମେ ରଖିବ କୋଉଠି ଷ୍ଟୋର କରିକି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭାଇ କ'ଣ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆମର ଭେଜିଟେବଲ କଥା, ସେ ଟମାଟୋ ହଉ ହେଲା, ସେ ବ୍ରିଞ୍ଜଲ ହଉ, ତାକୁ ତମେ ରଖୁଛ ଗୋଟେ ଟର୍ନ ରଖୁଛ, ତା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ବେଟର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର, ସେଇ ୱେୟାର ହାଉସ୍ ଦରକାର କାପାସିଟି, ବଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସାରେ। ଆମର ସର୍ଟେଜ ଅଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଷ୍ଟୋରେଜ ହଉ ହେଲା, କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଏଫସିଆଇ ର ଗୋଡାଉନ ହେଲା, ଏସବୁ ବହୁତ ସର୍ଟେଜ ଅଛି ଆମର। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଆମର ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁଅର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ହାଇ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ଫୁଡ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ହେଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ବୋଥକୁ ଏଇଠି କଭର କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ ଫାଇନାଲି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆମର ଭେଜିଟେବୁଲ ହଉ କିମ୍ବା
ଆମର ସେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍ ହଉ ଯଦି ସେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ବି କୋଉଠି ମଣ୍ଡି ପାଖରେ ଫାଇନାଲି ତ ଲୋକ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ସେଲ୍ କରେଇବା ନା ସେଇଠି ବି କିଛି ଅଲଗା ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି। କ'ଣ ଦେଖ ଜିନିଷ କ'ଣ ହଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଫାର୍ମର କହିଲା କି ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ମଣ୍ଡିରେ ନିଜେ ବିକିବି ହେଲା ମଣ୍ଡିରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହଉଛି ନା ସେଠି ବହୁତ ସାରା କମିଶନ ଏଜେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଫି ଦବ କିଛି ମଣ୍ଡି ଫି ଦବ ହେଲା ତମେ ସେଠି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚାର୍ଜ ଦବ ଦ୍ୟାଟ୍ ହୁଏ କ'ଣ କି ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଫାର୍ମର ଯଦି ସେ ସେଲ୍ କରେ ନା ସେ ଦେଖିକି ତାର ପ୍ରଫିଟଟା କମ ହେଇଯାଏ। ହାଲାକି ସେ ଠିକ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକିଥିବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା କମିଶନ ଦେଇ କରି ସେ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ତା ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସେ ପାଇପାରେନି। ତାପରେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଅଫ ଟ୍ରେଡର୍ସ ମାନେ କ'ଣ କି ଯୋଉ ଟ୍ରେଡର ଥାନ୍ତି ନା ଥିବେ ଆମର କିଛି ମେନ୍ ଟ୍ରେଡର ଥିବେ 8-10ଟା ଟ୍ରେଡର ସିଏ କ'ଣ ନା ସିଏ ଫିକ୍ସ କରିଦେବେ କି ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭେଜିଟେବୁଲର କିମ୍ବା ଏଇ ଫୁଡ୍ର ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ ଏତିକି ଫିକ୍ସ କଲୁ। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏ ଅଛି ତ ଏ ର ମୁଁ ପ୍ରାଇସ୍ କଲି କିଲୋ 25 ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ମାନେ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲେ ତ ଯଦି ବାକି ଗୋଟେ ଗଲା ହେଲା ଫାର୍ମର ଗଲା କି ମୁଁ ବିକିବି ତାକୁ 27 ଟଙ୍କାରେ 28 ପାରିବନି ଏମାନଙ୍କ ରୁଲ୍ ବହୁତ। ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ନା ଏମ୍ଏସ୍ପି ଇସ୍ୟୁ ଦେଖିଥିବ ଅଲୱେଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିକି ଆମର ଏମ୍ଏସ୍ପି ଉପରେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ କି ଫାର୍ମର ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ ନା କରିବୁନି ଭାଇ ଆମକୁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଏତିକି ଦିଅ। ତ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଏଫ୍ଆର୍ପି ଏତିକି ମୁଦ୍ଦା ତମେ ଯଦି ପଢ଼ିଦେଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି ୟା ପରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ବେଶୀ ଜିନିଷ ସେଇ କ୍ରପିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫାର୍ମିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବହୁତ ଇଜି ହେଲା। ତ ଏତିକି ଆମର ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ଓକେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନା ବିଲକୁଲ ବେସିକ୍ ଯାଉଥିଲେ ବେସିକ୍ରୁ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫାର୍ମିଂ। ଦେଖ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫାର୍ମିଂରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଚାନ୍ସ କମ୍ କି ଆସିପାରେ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବଟ୍ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେଲା ନା ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତମେ ଖାଲି ପଳେଇ ଆସ। ତ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫାର୍ମିଂ ଉପରେ ତମ ପାଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରି ନଲେଜ ଅଛି ନା ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଲାଗେ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେଲା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫାର୍ମିଂ ଉପରେ ତମ ପ୍ରି ନଲେଜ ଧରିକି ଯାଅ ସେତିକି ହେଉଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବିକଜ ଏଇଠି ଚାନ୍ସ କମ୍ ଏଇଠୁ କିଛି ପଚାରିବ। ତଥାପି ବି ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରି ନଲେଜ ପିଲା କହିବେ ମୋର ବୁକ୍ ନାହିଁ ମୁଁ କୋଉଠି ପଢ଼ିବି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ୟାକୁ ଦେଖିଦେବ। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫାର୍ମିଂରେ କ'ଣ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଫାର୍ମିଂ এইটি କ'ଣ ଖାଲି ମନେ ରଖିବ କି ଏଇଠି ହାଇ ଇନପୁଟ୍ ଦିଆଯାଏ ହେଲା। এইଠି ମୁଁ ତମକୁ ଡିଟେଲ ପଢ଼େନି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ବଡି କନକ୍ଲୁଜନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଠି ଚାନ୍ସ କମ୍ ତମକୁ ଏତିକି ଦେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେଲା ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଛାଡ଼ିକି ଆସିବନି ହେଲା। ଛୋଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଲେଖିଲ ଦେନ୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଫାର୍ମିଂ ତାପରେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ଫାର୍ମିଂ ହେଲା ତାପରେ ମିକ୍ସ ଫାର୍ମିଂ ଯଦି ଦରକାର ସେଠି କହୁଛି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମେନ୍ ପାଇଁ ହେଲା। ତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଫାର୍ମିଂ କଲେ କ'ଣ ଯୋଉଠି ଆମର କ'ଣ ନା ଇନପୁଟ୍ ହାଇ ଥାଏ ଅଧିକା ଥାଏ ଇନପୁଟ୍ ହେଲା ସେ ଲେବର ଇନପୁଟ୍ ହଉ ଇରିଗେସନ୍ ହଉ ହେଲା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ମେସିନାରୀ ହଉ ଆମେ ସେଇଠି ଇନପୁଟ୍ ଭଲସେ ଦଉଛେ ମାନେ ହାଇ ଇନପୁଟ୍ ଦଉଛେ ଫର୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଫ୍ରମ୍ କ'ଣ ସ୍ମଲ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ଛୋଟ ଜାଗା ଛୋଟ ବଟ୍ ମୁଁ ଭିତରେ ଇନପୁଟ୍ ଅଧିକା ଦଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ରିଜନ୍ କ'ଣ এইটা ସେଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କୋଉଠି କହିବି ଯୋଉଠି ଆମର ହାଇ ପପୁଲେଟେଡ୍ ଏରିଆ ଥାଏ କୋଉଠି ଆମର ନା ହାଇ ପପୁଲେଟେଡ୍ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଥିବେ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସେଠି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଧିକା ଦରକାର ତ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଭାଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ଛୋଟ ବଟ୍ ଆମର ନିଡ୍ ଅଧିକା ସେଠି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ଇନପୁଟଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ଇରିଗେସନ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ବୁଝିଲା ଆମେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଫାର୍ମିଂ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ନା ହାଇଲି ପପୁଲେଟେଡ୍ ଏରିଆରେ ୱିଥ୍ ସ୍ମଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ସେ ଏସିଆ ହଉ ୟୁରୋପ ହଉ ଯଦି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ କହିବି ଆମର ପଞ୍ଜାବ ହଉ ହରିୟାଣା ହଉ ହେଲା ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ଏଇ ଫାର୍ମିଂକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଏ ବୁଝିଲା ଏତେ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପଡ଼ିବିନା ପରେ। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ଫାର୍ମିଂ ୟାର କ'ଣ ଉଲ୍ଟା କରିଦେବ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ର ଉଲ୍ଟା କରିଦେବ ଇଏ ମାନେ କ'ଣ ନା ଏଇଠି लो इनपुट दिया जाए इन लार्ज लैंड रे माने जगह बहुत नहीं जगह कुछ अभाव नहीं बिलबाड़ी दुनिया पड़ी खाली इनपुट लो दिया एठी माने कौन एठी लार्ज लैंड होल्डिंग हम बहुत बड़ इनपुट तो लो रही एठी माने इंटेंसिव रो उल्टा कर दो कौन हमरो एक्सटेंसिवटा एठी कौन ना हाई मेकानाइजेशन हुए ड्यू टू लार्ज लैंड एरिया এটা ইন্ডিয়াରେ পসিবল ହୁଏନି ବେଶୀ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ସବୁ ସ୍ମଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ 70% ଆମର ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ଦିଆବ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ସ୍ମଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ଏରିଆ ଥିବ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଯେମିତି ଆମର କାନାଡା ହେଇଗଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଇଗଲା ସେଇପଟେ ସବୁ ବେଶୀ ଏଗୁলো ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଏ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଡିଫରେନ୍ସ ବୁଝ କ'ଣ
এইଠି କ'ଣ ନା ଏଇଠି ଲୋୟର ଇଲ୍ଡ ହୁଏ ପର ହେକ୍ଟର, ମାନେ ୟାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ବହୁତ କମ୍ ରହିବ ପର ହେକ୍ଟରରେ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ହେକ୍ଟରରେ ଯଦି ତମେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ଫାର୍ମିଂ କରୁଛ, ଯେତିକି ହେଉଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ ତାର ଡବଲ ହୁଏ ଆମର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭରେ କ'ଣ ସେଠି ଇନପୁଟ ଅଧିକା ଦିଆଯାଏ, ଏଇଠି ଇନପୁଟ ଅଧିକା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା, ବହୁତ କମନ୍ ଥିଲା। ଥାର୍ଡ କ'ଣ ନା ମିକ୍ସ ଫାର୍ମିଂ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ପ୍ରି ପାଇଁ ହେଲା। କ'ଣ ମିକ୍ସ ଫାର୍ମିଂ, ଯୋଉଠି କ'ଣ ହବ କହିବି ନା ବେସିକାଲି ନା କ୍ରପ୍ ବି ହବ କଲ୍ଟିଭେସନ, ତା ସହ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟକ୍ ବି ହବ। ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟକ୍ କ'ଣ ଯେମିତି ଆମର ଡାଏରୀ ହେଇଗଲା, ଫାର୍ମ ହେଇଗଲା, ପୋଲ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା, ଗୋଟ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା, ମାନେ ତ କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି, ମାଛ ଫାଛ ଯାହା କରୁଛ କରିବ, ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ହବ। ବେସିକାଲି ଏଇଠି ହୁଏ କ'ଣ ନା ଏଇଠି ହାଇ ରିଟର୍ନ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଏ। କେମିତି କରାଯିବ ଦେଖ, ତମେ ଚାଷ କଲ, ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା କି ମୁଁ ମକା ଲଗେଇଲି କି ଆଉ କ'ଣ ଲଗେଇଲି ଲାଗି, ତ ତମର ଯୋଉ କ୍ରପ୍ ଯୋଉ ରେସିଡ୍ୟୁ ବାହାରିଗଲା ତାକୁ ସେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଆଜ୍ ଆନିମଲର ଫିଡ୍ ହିସାବରେ। ତାକୁ ଛେଳି ଫେଳି ତାକୁ ଖାଇବେ, ଆରାମସେ ଖାଇବେ, ଗୋଟ୍ ଖାଇବେ। ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ତମେ ଯଦି ଯୋଉ କ୍ରପ୍ ଯୋଉ ରେସିଡ୍ୟୁ ଅଛି, ତା ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ କ'ଣ ତା ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟଟା ଅଛି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଥାନ୍ତ, ଏଇଠି ଫିଙ୍ଗିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ, ତାକୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ କିଏ କଲା, ତାକୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ ତମର ଆନିମଲ କଲା, ତମର କାମ ଦେଲା, ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେଲା। ଦେନ୍ ଆନିମଲଙ୍କର ଯୋଉ ଡଙ୍ଗ ଅଛି ହେଲା, ବେସିକାଲି ଯୋଉ ଗୋବର ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛ, ତମେ ତାକୁ ଏଗେନ୍ ତାକୁ କ'ଣ ତାକୁ ତମେ ତମର ମାନେ ଲଗାଉଛ ଆମର କଲ୍ଟିଭେସନରେ, ତମର ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ। ବୁଝିହେଲା, ମାନେ କ୍ରପ୍ ରେସିଡ୍ୟୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ଆନିମଲକୁ, ଆଉ ଆନିମଲ ଡଙ୍ଗକୁ ତମେ ଏଗେନ୍ ତମ ଚାଷରେ ଲଗେଇଦେଲ। ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ମାନେ ଯୋଉଟା କ୍ରପ୍ରୁ ବଳି ପଇଲା ତାକୁ ଆନିମଲକୁ ଦିଅ, ଯୋଉଟା ଆନିମଲ ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ତମେ ଚାଷରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଏଇଟା କହନ୍ତି ମିକ୍ସ ଫାର୍ମିଂ ହେଲା, ଯୋଉଠି ବେସିକାଲି କ'ଣ ନା ଆମର ଲେଖିବ କ୍ରପ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟକ୍, ସେ ଡାଏରୀ ହଉ, ପୋଲ୍ଟ୍ରି ହଉ, ଗୋଟ୍ ହଉ, ଆମର ସବୁ ଏକାଠି ଇଏ କରାଯାଏ ମିକ୍ସ ଫାର୍ମିଂ। ବୁଝିଲା, ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମିଂ ଉପରେ କେବେ ବି ଆଶା କରିବନି କି ତମକୁ ଓପିଏସି ୟୁପିଏସି ପଚାରିବ କି ୟା ଉପରେ କର। ବୁଝିହେଲା, ତମକୁ ପଚାରିଦେଲା କି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫାର୍ମିଂ ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ତମେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିବ, ତିନିଟା ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ହେଉଛି କି ଡ୍ରାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାର୍ମିଂ, ଯୋଉଟା ବେସିକାଲି ମନସୁନ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ହେଲା, ମାନେ ମନସୁନ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହବ। ଯୋଉଠି କ'ଣ କି ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ କି ରେନଫଲ୍ ଏରିଆ ଥିବ, ବର୍ଷା ବର୍ଷା ବେଶୀ ହଉନାହିଁ ହେଲା, ଡ୍ରଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କ୍ରପ୍ ଥିବ ଦରକାର ଆମକୁ ସେଠି, ଲୋ ମଏଶ୍ଚର ଆଭେଲେବିଲିଟି ରହିବ, लो प्रोडक्टिविटी हुए कंपेयर टू इरिट एरिया, एठी बिकज इरिगेशन ही होनी, एठी पानी नहीं एठी हमर कोन दबे एग्जांपल जेंति हम किछि मिलेट्स हे गला लाइक बाजरा, ज्वार हे सबुडा, पल्सेस ऑयल सीड लाई हमर सब कोन ड्राईलैंड फार्मिंग कहंती। एरिया कोन राजस्थान हे गला किबा महाराष्ट्र कर्नाटक किछि पार्ट से भी ए सब यूज करा जाय। देन कोन हमर ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो देखि पारो जो क्वेश्चन तो पचारि बन, जदी पचारि देला भाई तमर 2 पेज हे गला, तम जदी 5 प्रकार फार्मिंग तमर 2 पेज हे गला, एतिके ही नियो। एबे मु तुमको डाटा देबी 8 पेजर 10 पेजर, किंतु चांस कम से पचार, तो किसी लाभ बनूँ कि सेन्स बनूँ कि सेन्स बनूनी, तो कौन करवा एतिक डाटा नहीं से एग्जाम थोदेव, एतिक भलसे लिखिपारे तुमको 10 ରୁ 7 मिलଯିବ ହେଲା, एंड ताठ अधिक क्या मिले भी ना, 10 ରୁ 7 8 के अधिक क्या मिले भी ना जे तो टपर हो। ओके, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जोटा को आम झूम भी कहते, कौन कहती ना झूम कल्टीवेशन कहती, सब ना शुणी प्री पाई है। तो यहीटा कौन हुए कह देख फास्ट ना देखे दिए है, यहाँ एक्चुअली इंपोर्टाट है। जदि मुझे माउंटेन एरिया रे, हिल एरिया रे ये सब आमर कौन कराए आम बेसी प्राक्ट कराए। जमी तुम कह ना ये आम जंगल अच्छे लाई, ये गोटे मोर फरेस्ट अच्छे लाई, यहाँ बेसी आम ट्राइबल यूज करती है। ये कौन हम कह से गोटे एरिया रे से कौन कले से जंगल को से काटिदेले, से बर्न कले, स्लाश एंड बर्न कहते लाई, ठीक अच्छे। देन कौन ताको से 3 ରୁ 4 वर्ष ताको सी एरिया को छाड़देले खाली, खाली छाड़ा पर एबे से ता ऊपर चाष करेंगे। बुझला, एबे जो से एट चाष करुवे से एट किसी केमिकल यूज करेंगे, किसी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड किसी यूज करेंगे है, से बिल्कुल नेचुरल ट्रेडिशनल वे यूज करेंगे ए लैंड को। जेहेतु ए भितर किसी हमर फर्टिलाइजर कि किसी पेस्टिसाइड यूज करा होनी, ताने कौन कि जो माटीर अच्छे उर्वरता 4-5 वर्ष पर ये भी सरीज, तो सी कौन करती यही एरिया चाष करुवे, से समय सी आउ गोटे एरिया को कौन करती सेम प्रोसीजर फॉलो करती, सी जी डाल फल काटिदेवे से पकईदे, दैट टू कौन से जो पत्र पड़ी से माटीटा आम फर्टाइल हो जाओ। बुझेगा, तो जिते बड़े कौन हो 3-4 वर्ष पर यही चाष भल बाहर प्रडक्शन बेसी हेनी है, लो इल्ड हो, से कौन करते ये पुणी सिफ्ट करेंगे। एवं यही माटी बिल्कुल रेडी थी चाष ये चाष करुवे, से पुणी नुआ गोटे एरिया को आग बन रखिथे, से कौन करती खाली सिफ्ट कर चलती, यहाँ कहते शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तुम कह सर एमती किए करे करती,
ट्राइबल एरिया रे सब करती आसाम हो गला है मिजोराम हो गला मेघालय हो गला से पटे बहुत हुए ओडिशा भी किसी पार्ट रे भी हुए है एटा को शिफ्टिंग कहा जाए जो शिफ्ट करूची ताको शिफ्टिंग किबा झूम कल्टीवेशन कहा जाए है एटा कौन मन रखिबो गोटे बहुत टेक्निकल ना गोटे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते माने कौन प्रिमिटिव प्रिमिटिव कौन पुरातन बहुत पुरातन तुम ट्राडिशनल यहाँ कहते प्रिमिटिव देन सब्सिस्टेंस माने कौन कि तुम तुम निजर कंज्यूम करुच सेल्फ कंज्यूम तुम मोटिव ना कि मुझे चाष करी बाहर मार्केट में सेल्फ पैसा कमेबी नो तुम देखिल कि भाई मुझे खाई पारि मो के आवश्यक मुझे कली दैट से कौन कहते प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बुझीगला ओके एठी यूज करा जाए सिंपल टूल्स लाइक कौन से दा हेगला कुदाल हेगला है से आक्स हेगला है ये सब से यूज करती बेसी कौन ये दरकार हुए फैमिली लेबर बाहर आवश्यक ना सेल्फ कंजम्पशन कहले ओरिएंटेड जहाँ चाष करेंगे से निजे खाइबे बट ये प्रोडक्शन लो हुए है कौन डेफिनेटली तुम जो किसी यूज कर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड तो से प्रोडक्शन लो ही हम है ये कौ एरिया हुए मेनली आमर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया अच्छी लाइक आसाम हो गला मेघालय मिजोराम त्रिपुरा से पटे प्रैक्टिस हुए एंड ओडिशा है जो ओपीसी दौज लिखे कि आम किसी ट्राइबल एरिया अच्छी ओडिशार छत्तीसगढ़ आम से टाइप फार्मिंग देखा मिले ओके तो लिखे कौन या आसिले कि ट्रेडिशनल लो इनपुट एग्रीकल्चर सिस्टम माने कौन तुम इनपुट बहुत कम दौच तुम ये कौन इनपुट कह कि देल तुम ये इरिगेशन कलनी ओके तुम ये पेस्टिसाइड यूज कलनी मेकानाइजेशन किसी कलनी फर्टिलाइजर किसी यूज कलनी है सीड्स आनलनी हाइब्रिड कौन कल कि नहीं तुम इनपुट बहुत लो तुम केवल कौन फोकस कल कि तुम लेबर देदेल लैंड तो अच्छी भाषला से तो गोटे ट्रेडिशनल लो इनपुट एग्रीकल्चर सिस्टम ये प्रैक्टिस करते मेनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय यूजिंग सिंपल टूल्स एंड फैमिली लेबर बुझला एतिकी डाटा तुम नहीं करी तुम कौन कर तुम एग्जाम जीव है टाइप्स ऑफ फार्मिंग मोर देन सफिशिएंट बुझला ओके एबे कौन एबे तुम खाली क्लास करुच ना जिते ये सेम जिनस को आम पी वाई की देखा थ्रो रे मुझे तुमको इंट्रो तार कौन रख मेन रे कनक्लूजन रे मुझे तुमको सब कह टेंशन हेनी एंड हाँ जो जिनस एग्जाम रे बेसी चांस नहीं आसबार आम टाइम वेस्ट करवानी जमी फार्मिंग सेकेंड कौन ना फार्मिंग मेथड सर मेथड कहले कौन मेथड कहले ना चाष करने को मेथड को प्रक्रिया को यूज करुँच बुझेगा तो फार्मिंग मेथड उपरे से गोटे क्वेश्चन पचार दिए कि टिलेज मेथड है यार कौन अच्छी तार कौन प्रोज अच्छी कौन कौन अच्छी आ कौन बेस्ट वे हो पार बुझेगा यहाँ हुए कौन ना टिलेज मेथड रे जब माटी को माटी को ताकू बहुत डीपली है माने प्लगिंग करा हल करा जाए बुझेगा जहाँ कौन तार जो वेड्स अच्छी सब घास फास अच्छी से पूरा बाहरी आसे यहाँ हुए कौन कि जहाँ भी आम सब ग्रीन हाउस गैसेज अच्छे ना से भी बाहर बाहरी आसे रिलीज हो जाए तो कौन ना कौन आम पल्यूसन से हुए आमर तो जिनस कौन हो टिलेज मेथड उपर मन रख डाटा बहुत कम नहीं जो एग्जाम नब कौन ना यहाँ कौन बेसिकाली ना गोटे एमती मेकानिकल प्रिपेरेसन ऑफ सॉइल बाय प्लगिंग तुम प्लगिंग करुच टर्निंग करुच और लुजिंग को कौन तुम हल्का कर माटी को घोड़ी बिफोर सोइंग सीड तुम चाष कर आगु माटी को जो खोलाखोली करती से कहते टिलेज मेथड बुझेगा तार ऑब्जेक्टिव कौन कौन ना तुम माटी को लूज कर फॉर बेटर रूट ग्रोथ हो टू कंट्रोल वेड्स जो वेड्स अच्छी गुड़ा जो घास फास सब बाहर जाऊ तुम जो फर्टिलाइजर को यूज कर तो कौन ना सी ऑर्गेनिक मैटर सह सी बहुत भल से बेटर जमी मिक्स हो पार कौन तुम जो फर्टिलाइजर एंड सी ऑर्गेनिक मैटर गुड़ा कौटी आम सॉइल भितर तो दैट्स व्हाट करती आ कौन ना इंप्रूव कौन आम सॉइल आमर इरिगेशन आमर तो सॉइल इरिगेशन ये बहुत भल इंप्रूव हुए तो बेसिकली हूँ कौन कि जो टिलेज मेथड कि आम डीपली हल कर तो ये किसी प्रोज अच्छी किसी कन्स भी अच्छी है बेसिकाली टिलेज मेथड पढ़िया करूना एग्जाम रे यही तीनोटी तार टाइप को लिखी आसो कौन गोटे कहते कन्वेंशनल टिलेज गोटे कहते मिनिमम टिलेज गोटे कहते जीरो टिलेज
जोटा आमर जीरो टिलेज ताको आमर सस्टेनेबल टिलेज बोली भी कहा जाए है तुम खाली जीरो मन रख हुए कौन देख जिन कौन फास्ट देखा तुम जो टिलेज करुच तुम कौन आडभांटेज हुए तुम फायदा हूँ कौन कि तुम जो उइड्स गुड़ा से बेटर रिमूव हो तुम पेस्ट रिमूव हो जहाँ सब कीड़ा पीड़ा सब ऊपर पलि आस बहुत भल कथा डिसआडभांटेजेस हूँ कि जो आम ग्रीन हाउस गैसेस अच्छी ना से रिलीज हो जाए ह्यूमस है जो माटर ऊपर लेयर रे जो ह्यूमस गुड़ा अच्छी से भी डिक्रिज हो तो तुम जो सॉइल रो जो फर्टिलिटीटा अच्छे आमर से ह्रास पाई जाए तुम पुणी लास्ट बाध्य कौन कर बाध्य तुम तापर पुणी से फर्टिलाइजर पकई चल ये पकई चल बिकज तुम सॉइल तो फर्टिल नहीं तो हूँ कौन तो टिलेजटा केते प्रकार थाए ना टिलेजटा बेसिकली आमर 3 प्रकार थाए जमी कौन सा टिलेज ये हुए कौन से डीप प्लगिंग कर जाए माने अधिका प्लग कर जाए हल कर जाए ठीक है डीपली ये कौन तुम डीपली तुम प्लगिंग कर कौन ये हाई सॉइल कौन ना आमर डिस्टर्बांस हम माटी गुड़ा निहाती से अधिका से हल हुए तो गुड वेट कंट्रोल हुए जो आम घास फास गुड़ा से भल से रिमूव हो जाए बट प्रॉब्लम कौन कि इनक्रीज हुए रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन है मिनिमम टिलेज या माने कौन ये कौन जमी मुझे कमर्स टिलेज आम डीप करते प्लगिंग मिनिमम रे आम लेस करते है सॉइल डिस्टर्बांस मु तुमको बेसी डिटेल्स ये नौनी है या ऊपर तुमको R&D करी क्वेश्चन पचार यूपीएससी या यूपीएससी जदि पचारा क्वेश्चन से हल्का हल्का बेसिक पचार या भर को जीवन R&D कर क्वेश्चन से बनू ही ना या किसी बनूनी है बहुत सारा क्वेश्चन अच्छे पढ़ाई ओके तो मिनिमम टिलेजर कौन जो सॉइल अच्छी लेस डिस्टर्ब करा जाए ये आमर ऑब्वियसली तुम टाइम सेव हम कॉस्ट सेव हम है खर्च कम हम किंतु ये कौन आम जो वेट कंट्रोल आमर से बहुत कम हुए हल्का हम आमर तापर कौन जीरो टिलेज जोटा कौन कहते ना कहते आम सस्टेनेबल टिलेज कहते यहाँ कौन बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस कह जाए ये फॉलो कर कौन देख जिन कौन हो सीड्स आर कौन डायरेक्टली स्टोर विदाउट प्लगिंग तुम बिना प्लगिंग कर बिना हल करके तुम सीड्स को डायरेक्टली प्लग कल बहुत भल कथा तो जो ग्रीन हाउस गैस अच्छा माटी भितर से बाहर को आसबे भल कथा सॉइल तुम इरोजन हेनी हम कि हेनी ये बहुत भल कथा तुम ह्यूमस थिला से भी डिक्रिज हेनी जिनस कौन हो जो क्रॉप जो रेसिड्यू अच्छी रिमेन ऑन द सरफेस सी आम कौन माटी ऊपर हो क्रॉप रेसिड्यूटा तो भल कथा पत्र पत्र हो सार हम से चाष कर এটা ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ବିକଜ କ'ଣ ନା ଏଠି ଫର୍ଟିଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିବ ଆମର ହ୍ୟୁମସ୍ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବନି ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ତାହେଲେ ଏଠି ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି କ'ଣ କି ଭାଇ ତମର ଯୋଉ ୱିଡ୍ସ ଅଛି ସେ ତ ରହିଗଲା ସେ ବାଳୁକା ଘାସ ଫାସ ରହିଗଲା ସେ ହଲ ଯିବନି ତ ଚାଷ କେମିତି କରିବ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମର ଯୋଉ ୱିଡ୍ ସାଇଡ୍ ଯୋଉ କୋର୍ସ ଥାଏ ନା ସେ ବହୁତ ହାଏ ସେ ଘାସ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଆସେ ସେ ସବୁ ବହୁତ ହାଏ ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ତା ଫଲୋ କ'ଣ କରାଯିବ ଡେଫିନେଟଲି ଜିରୋ ଟିଲେଜ୍ ଫଲୋ କର किंतु ये प्रॉब्लम कौन आम वेबसाइट कॉस्ट वेरी हाई रुहे दैट्स व्हाई कौन आम टिलेज मेथड को आम रिप्लेस कर पारिबा कोठी कहबी गोटे न्यू मेथड रे दैट इज मुल्चिंग मेथड तो जदि क्वेश्चन पळि आसी गला कि तुम टिलेज मेथड पर कह तार प्रोज कौन कॉन्स कौन एंड बेटर सजेशन कौन तुम दब लास्ट कौन लिखिदेल कि व्हाट इज टिलेज मेथड ताक लिखिल देयर 3 टाइप्स ऑफ लिखिबो टिलेज मेथड हैला कन्वेंशनल मिनिमम देन लिखिबो जीरो कि जो कहते सस्टेनेबल टिलेज बोली लिखिब लिखला पर प्रोज कौन लिखिल लिखिदेव बेटर कौन ना मुल्चिंग मेथड है ये कौन कराए ना ये कभर कराए द टॉप लेयर ऑफ सॉइल को विथ ह्यूमस विदाउट डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल माने कौन सॉइल को बिना डिस्टर्ब करेगी तुम कौन बेसिकली ता ह्यूमस से तुम कभर कल सॉइल को तापर तुम से चाष कल है बेसिकली कौन ये ना जमी थिला ना जीरो टिलेज मेथड ये सहीटा कौन कहते मुल्चिंग मेथड कहते पाखा सेम ये कौन मेंटेन रुहे सॉइल टेम्परेचर है प्रिवेंट हुए सॉइल इरोजन ओके इंप्रूव हुए सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव हुए क्रॉप यील्ड आमर प्रोडक्शन गुड़ा इंप्रूव हुए इनक्रीज आमर कौन हुए ना वाटर यूज एफिशिएंसी ये सब प्रोज गुड़ा क्या आमर मुल्चिंग मेथड बुझला तो जब पचार देला फार्मिंग मेथड उपर ये दुईटी मेथड मन रख मोर देन सफिशिएंट है एपर्यंत आम ये कवर कले ना आम केवल बेसिक आम ये डाटा नेले बिकज एग्जाम ये चांस कम ये आशा कम पचार थर्ड टॉपिक जा कौन ना इरिगेशन मेथड हाँ क्वेश्चन यू पचार दिए है यू चांस अच्छे क्वेश्चन पचार दब जदि आसीगला इरिगेशन मेथड उपरको है कौन ना आम 2 प्रकार अच्छे गोटे
ମାକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ। ମାକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେନି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେଶୀ ପଚାରେ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ଉପରେ ହେଲା। ତଥାପି ଯଦି ପଚାରିଦେଲା କି ତାକୁ ତମେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କର, ତ ମାକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ କଲେ କ'ଣ, ଯୋଉଠି ବେସିକାଲି ଯେମିତିକି ଲାର୍ଜ ୱାଟର କ'ଣ ଲାର୍ଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ ଥ୍ରୁ ଆମର କେନାଲ ହଉ ହେଲା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ହଉ ତାପରେ ଆମର ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରାଯିବ। ବଟ୍ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଏଇଠି ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବହୁତ ହୁଏ। ତ ଗୋଟେ କେନାଲ ବନେଇବ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା ହବନି, ଡେଫିନେଟଲି ହବ। এইটি কোণ ইয়ার কোণ ফিচর্স কোণ ম্যাক্রো ইরিগেশনর কি এইটি যেটি আমার হাই ওয়াটার ইউজ দরকার সেইটি ম্যাক্রো ইরিগেশন করা যায়। সুইটেবল কাহা পাই যেতিকি আমার সব লার্জ ক্রপ আছে লাইক কোণ রাইস হয়ে গলা হুইট তা পাই আমার সুইটেবল। ওকে ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ ମାଇକ୍ରୋ ଇଏ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, তুমি ଦେଖିଥିବ ଆମର କ୍ଷେତରେ ବହୁତ ସାରା ନା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ଥାଏ, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ଗୋଟେ ସେ ବୁଲୁଥିବେ ସେ ଖାଲି ସ୍ପ୍ରେ ହଉଥିବ। ସେଇଠି କ'ଣ ଆମର ୱାଟର 30 ରୁ 40% ହେଲା, ମୁଁ ଡାଟା ଲେଖିନି ଏ ଡାଟା ମେନସନ୍ କରିଦେବ ନା 30 ରୁ 40% ୱାଟର ଏଇଠି ଆମର ସେଭ୍ ହୋଇଯାଏ। ୱାଟର ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ସେଭ୍ ହୁଏ। ଏଇଠି କ'ଣ ହୁଏ କି ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ and measured manner directly to the root zone of the plant ହେଲା फालतू कुआडे नहीं, डायरेक्ट प्लांट रूट जोन को पानी दिया जीवो स्प्रिंकल थ्रू रे। एग्जांपल कोन ड्रिप इरिगेशन हो कि हमर स्प्रिंकल इरिगेशन हो, इटा माइक्रो इरिगेशन बुझिला। तो गवर्नमेंट कोन स्टेप नेची नेची कोन कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तार थीम कोन थिला ना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कोन पर ड्रॉप मोर क्रॉप बुझेला। तुम लागू डाटा कम डाटा एतिक बहुत है एतिक मुझे लिखी बुझे एतिक लिखब ना टी एक्सप्लेन कर तुम 1.5 पेज आराम भरीज आराम 1.5 पेज भरीज। ओके तो ये माइक्रो इरिगेशन प्रोज कौन 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 देख सब बड़ जिन कौन डेफिनेटली फायदा हो कौन कि तुम ये एनर्जी सेव हम है। बाकी जो आम पंपिंग अच्छी अपेक्षा ये कौन पंपिंग यार बहुत कम सेव हुए है, एनर्जी बहुत कम खर्च हुए। वाटर एफिशिएंट डेफिनेटली वाटर वेस्टेज लो हुए ये आउ वाटर इवापोरेशन बहुत कम हुए, बहुत भल कथा है। बट नेगेटिव कौन नेगेटिव हो स्प्रिंकल करवा है ड्रिप इरिगेट करवा इनिशियली बहुत कॉस्ट पड़े, हाई इनिशियल कॉस्ट। नेगेटिव कौन ना नॉट सुइटेबल फॉर ऑल क्रॉप्स, सबुदी पाई हमर सुइटेबल नुह। किछि क्रॉप अछि ना जोटी कौन एते से वाटर इंटेंसिव नुह, बट तुम सेठी पानी कौन करबो एटा से लगे पारिबोनी। टेक्निकल नॉलेज रो बहुत आवश्यक, टेक्निकल नॉलेज को स्किल को है बहुत आवश्यक तुम ये टाइप इरिगेशन करने बुझेगा। तो एतिकी तुम इरिगेशन उपर को डाटा नब मोर देन सफिशिएंट। बाकी कौन बाकी जिन हूँ इंट्रो बॉडी कंक्लूजन केमिति लेखा जीव सजे करनी मुझे तुमको पीवाईकी करी यही लेक्चर में करी टेंशन नबनी। देन जो कौन ना आमर नेक्स्ट आम टॉपिक कि क्रॉपिंग पैटर्न। आम प्रथम कौन पढ़ले पर्यंत प्रथम बेसिक पढ़ले है, टाइप ऑफ फार्मिंग पढ़ले, तापर फार्मिंग मेथड पढ़ले, तापर पढ़ले इरिगेशन मैक्रो एंड माइक्रो इरिगेशन बुझला। तो सेतिक जिनस कौन आमर बेसिक थिला, बेसिक डाटा रे भी माने काम चलुला। बट एठू कौन आमर एक्चुअली एग्रीकल्चर सेशन आरंभ होला कौन माने एठू जा पढ़िबा तमर मैक्सिमम यूपीएससी रे फोकस या ऊपर। तो एबे को देखि क्रॉपिंग पैटर्न देख क्रॉपिंग पैटर्न कले कौन बेसिकली जेमिति कौन कि को एरिया रे तबे कौन क्रॉप करूज थर भाविच थर भाव कि ओडिशा हो गला वेस्ट बेंगल हो गला एपटा आमर बेसी राइस करा हो चाउल थर भाव थरे। बट तुम जब पलैब राजस्थान पलैब पलैब हरियाणा को सेपटे अधिका ह्विट करा गम भम कौन पाई थर भाव टिके किछि तो रीजन थिबो जो बिल्कुल फास्ट पड़छ नुआ पिला। देखो एटी होजी कौन कि आम साइड रे पानी बहुत है, आम साइड रे वर्षा फर्षा किसी असुविधा ना है, आम साइड रे मनसून उपरे किसी असुविधा ना माने बिना इरिगेशन रे भी ये कौन ना आम सस्टेन कर है। तो जिनस कौन हो कि आम पटे जब आम राइस करुचे है कि ह्विट करुचे तो यहीपटे आमको सेते इश्यू हेनी। कौन आमको इश्यू हेनी बिकज आम पटे ये वाटर किसी प्रोब्लेम ना। तुम जब राजस्थान पलैब से पट साइड रे से बेसी बाजरा फाजरा से यही सब करेंगे जहाँ पानी बहुत कम आवश्यक। तो तांको पटे कौन ट्रेडिशन से रही आसी फास्ट रू साइड रे। तो साइड रे जेहेतु बाजरा फाजरा से करती से कौन करेंगे पटे से रुटी खाइबे है पटे भात भात प्रैक्टिस करते कौन पाई बिकज फास्ट ना एनवायरनमेंट क्लाइमेट सुइटेबल करूनी राइस पानी ना
ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହାବିଟ୍ ଅଛି ଦେଖିବ ସେ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ଭାତ ଦେବ ସେ ଚିଡ଼ିବେ। ଓକେ, ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ନା ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେହେତୁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ପାଣି ଫାଣି ଆମ ପଟେ ଆଇସ୍ ହେଉଛି, ଆମ ପଟେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଅଲଗା। ତାମାନେ କ'ଣ ତାମାନେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ୍ଲାଇମେଟ୍। ଯିଏ କ'ଣ ଡିସାଇଡ୍ କଲା କି କ୍ରପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ବେଙ୍ଗଲରେ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ ରାଜସ୍ଥାନ ହରିୟାଣାରେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ କ୍ରପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ କହିଲେ କ'ଣ, କ୍ରପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ କହିଲେ ଦ କ୍ରପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେଫର करे ଟୁ ଦ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन ए रीजन ओवर ए गिवन पीरियड किंबा गिवन टाइम माने गोटे टाइम रे गोटे वर्ष हो को टाइप रो कौन ना को टाइप रो क्रॉप्स को हलाई को टाइप रो तमे क्रॉप्स टाको तमे लगाउछ से पर्टिकुलर एरिया रे ताको कोन कोन क्रॉपिंग पैटर्न। तो जदि कभी क्रॉपिंग पैटर्न ना मन रख टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न थाए तो गोटा हम मोनोक्रॉपिंग आम कहते सिंगल क्रॉप कहे लगे माने से केवल आमर गोटे ही आमर क्रॉप चलो। तो या क्वेश्चन पचारबनी गोटे मल्टी क्रॉपिंग माने कौन कि मल्टी क्रॉपिंग कहले बेसिकली जो आम कौन आसो ना मिक्स्ड क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग रिले क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। या माने कौन मिक्स क्रॉपिंग कहले यही सब तुम प्री अच्छी है यही सब तुम प्री डाटा तुम जो प्री रहा ये नॉलेज नब ताहले भी सफिशिएंट है। ओके, मिक्स क्रॉपिंग कहले कौन जो तुम ग्रोइंग कर टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड विदाउट एनी डेफिनेट रो पैटर्न। माने कौन कल तुम गोटे खेत नहीं गल से क्षेत्र कौन कल जहाँ पार्ल सब एका सागर लगे चल कि पैटर्न तो फॉलो करूँ नो डेफिनेट पैटर्न कि रो फॉलो करूँ डायरेक्ट पकईदेल दैट इज कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग। एटा कहीं करा जाए एम कौन ना टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर। तुम जो गोटे टाइप तुम सपोज क्रॉप लगेज है सपोज कौन कह तुम लगेच बेरी जब बेरी खराब हो गला तुम जो संपूर्ण बेरी सब तो खराब हो गला तुम बेरी भितर तुम जो लगेच चना गुड़े तमें कौन बेरी तो खराब हो गला कि चना खराब हो रहीगला से आमर चनाटा रहीगला आमर। तो ये कौन मिक्स कर दिया जाए दैट कौन जो गोटे आमर क्रॉप फेल हो गला तो आउ गोटे जो क्रॉप अच्छी ता द्वारा कौन आम लस पड़ानी। एग्जाम्पल कौन जमी व्हीट एंड ग्राम है से गहम एंड चना को तुम एका सागर लगेदेल लगा जाए। इंटर क्रॉपिंग अच्छी है या माने कौन इंटर क्रॉपिंग रे कौन ये रो पैटर्न फॉलो कर जमीती ग्रो टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली विथ ए डेफिनेट रो जमीती कौन आग लगेदेल गोटे किसी चाष पुणी आउट चाष पुणी आउट चाष है तुम मैंने आम थाए ना देख आम 4 धाड़ी भेंडी लगे दियो तापर 3 धाड़ी बैगण देखिए हुए बिल्कुल ये टाइप इंटर क्रॉपिंग करती। एम कौन कि एफिशिएंट यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो है जहाँ जो न्यूट्रिएंट दरकार आम सेटा दबा सनलाइट पड़ू स्पेस पड़ू है इंटर क्रॉपिंग करा जाए। एग्जांपल कौन जमीती मेज एंड सोयाबीन को लगा जाए अल्टरनेट रो रे गोटे अच्छे कौन अच्छे रिले क्रॉपिंग है से खास नुह तो लिखिदेव जो पचार क्वेश्चन कि कौन कौन क्रॉपिंग तुम पैटर्न फॉलो करुच लिख रिले कौन हुए ना शोइंग द नेक्स्ट क्रॉप बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। माने कौन कि तुम सपोज गोटे क्रॉप लगेच गोटे चाष करुच एबे तुम ताकू काटिबा पूर्व तुम आउ गोटे लगे दियो जमी कह देख देख धान फान कौन कर धान थाए पानी एरिया है पानी एरिया तुम धान काटब धान काटिया पूर्व से कौन बेरी फेरी बुणी दिखती तुम धान हो गला। ओके, तो धान काटिदेव देखिए 15 दिन पर तुम बेरीटा से गछ हो जाए मैंने गोटे तुम क्रॉप को काटिन तुम आउ गोटे क्रॉप को लगेदेल आम कौन कहे आम ताको स्टैंडिंग क्रॉप कहते है हालांकि कौन मुझे देखी मुझे शुणी एमती करते बोली बुझीगला। तो एमती जस्ट लाग बुझे कौन हुए कि तुम गोटे क्रॉप लगेच ताको काटिन तुम आउ गोटे कर कहीं एमटा कौन बिकज एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम तुम चाहो कौन कि कम समय मल्टीपल क्रॉप कर आम पढ़ुचे कौन आम पढ़ुचे आम पढ़ुचे ना मल्टी क्रॉपिंग। तो रिले क्रॉपिंग माने कौन तुम मल्टीपल तुम केमिति आमर क्रॉप कर मल्टीपल बास तार मेन एम है। आउ गोटे कौन क्रॉप रोटेशन जोटा कौन इंडिया में बेसी फॉलो कर आम कौन बेसी यहाँ फॉलो कर कौन कि जमीती कि ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन ऑन द सेम फील्ड इन डिफरेंट सीजन और इयर्स। माने तुम सेम फील्ड रे डिफरेंट सीजन रे तुम कौन डिफरेंट क्रॉप लगौच शुणी तुम हुए आमरटा कि देख आग तुम कौन राइस लगेदेव तापर व्हीट तापर पल्सेस एमती हुए ये सब तुम देखी आखिया करे आम धान लगा धान कटा सरला बेरी पलि आसो बेरी कटा सरला कौन पड़े कहे एम सब जी चलो पियाज रसुण
ଚାଲିବ। ଏବେ ସେ ତାର ସରିଥିବ, ସେ ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ଶାଗ ଫାଗ ଲଗେଇଦେବେ, ଶାଗ ସରିଥିବ ପୁଣି ଧାନ ସିଜିନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ବୁଝିହେଲା। ସେ ମାନେ ବିଲକୁଲ ତ ଛାଡ଼ିବେନି ସେ ଜାଗା ଜମିଟାକୁ। ତ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି କ୍ରପ୍ ରୋଟେସନ୍ କୁହନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଗଲା ନା ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ରପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ତ ଏଇସବୁ ଆମର କ୍ରପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନର ଟାଇପ୍, ଗୋଟେ ମିକ୍ସ କ୍ରପିଂ, ଇଣ୍ଟର କ୍ରପିଂ, ଇଲେ କ୍ରପିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ରପ୍ ରୋଟେସନ୍। ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏବେ ତମ ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଥିବ କି ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି କେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଫଲୋ କରୁଛେ, ହାଲାକି ଆମେ ଅଧିକା କ୍ରପ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଫଲୋ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଯୋଉଟା ଆଫେକ୍ଟ କରେ କ'ଣ କି କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେବ, ମାନେ କେଉଁ ଏରିଆରେ କିମ୍ବା କେଉଁ ସିଜିନ୍ରେ କିମ୍ବା କେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣଟା କ୍ରପ୍ କଲେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଯୋଉଟା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରେ, ଯୋଉଟା ଆଫେକ୍ଟ କରେ ଆମର କ୍ରପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ। ତ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ, ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି ହେଲା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲେଖିଛି 2ଟା ପଏଣ୍ଟ, ତାପରେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 3ଟା ପଏଣ୍ଟ, ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି। ବଟ୍ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ, ତମେ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ, ଏଇଭଳିଆ ସଜେଇକି ଲେଖିବ। କ'ଣ, ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରୁ, ଯେମିତି କ୍ଲାଇମେଟ୍, ଯୋଉଠି ରେନଫଲ୍ ଏରିଆ ସେଠି କ'ଣ ସିଏ ରାଇସ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ହେଲା, ଲାଇକ୍ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଏସବୁ ରିଜନରେ ମଡରେଟ୍ ଯୋଉ ରେନଫଲ୍ ହେଉଛି ସେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ହ୍ୱିଟ୍ ଉପରେ, ଲାଇକ୍ ପଞ୍ଜାବ ହେଲା। ସଏଲ୍ ଟାଇପ୍, ଇଏ ସଏଲ୍ ଟାଇପ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ସେ ବି ଆଫେକ୍ଟ କରିକି କ'ଣ କ୍ରପିଂ ଲଗାଯିବ। ଯେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍ କ'ଣ ସେ ବେଟ୍ ହେଉଛି କଟନ୍ ପାଇଁ, ଆଲୁଭିଆଲ୍ ସଏଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସୁଇଟେବଲ୍ ଫର୍ ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଟ୍, ଲ୍ୟାଟରାଇଟ୍ ସଏଲ୍ ସେ ଆମର ଟି ପାଇଁ ହେଲା, ଟି ହେଇଗଲା, କ୍ୟାସିନଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମର ଲ୍ୟାଟରାଇଟ୍ ସଏଲ୍ ମାନେ ତା ପାଇଁ ସୁଇଟେବଲ୍ ସିଏ। ତାମାନେ କ'ଣ ଇଏ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ କ'ଣ କି ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ା କି ତୁମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ରପ୍ସକୁ ତୁମେ ଏଇଠି ଲଗେଇବ, হয় ନାଇଁ। ଇଏ ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଖାଲି କ'ଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହଁ, ଆମର କିଛି ଇକୋନୋମିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ, ଯେମିତି କି ପ୍ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫିଟାବିଲିଟି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି କି ତୁମେ ଯଦି ଚାଷ କରୁଛ, ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଗୋଲ୍ କ'ଣ, କ'ଣ ଖାଲି ସେଲ୍ଫ କନଜ୍ୟୁସନ୍? ନୋ ଭାଇ, ମୁଁ କିଛି ସେଭିଂ କରିବି ହେଲା। ତାମାନେ କ'ଣ, ଯୋଉଠି ଆମର ହାୟର MSP କ୍ରପ୍ସ ଥିବ ସେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ଫାର୍ମରକୁ, ସେ ଦେଖିବେ କି କେଉଁଠି ମୁଁ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇବି, କେଉଁଠି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବି। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହିବି ପଞ୍ଜାବକୁ ଯିବ, ସେପଟେ ପେଡ଼ି ଫେମସ୍ ଲାଗି, ତାକୁ ଭଲ ଏବିସିଡିଟ୍ ମିଳିଗଲା ପଞ୍ଜାବରେ। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ନା, ସେକେଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି କି ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ, କି ଭାଇ ମାର୍କେଟରେ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଛି, ଫାର୍ମର ସିଫ୍ଟ କରନ୍ତି ଟୁ ହାଇ ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ କ୍ରପ୍ସ ଉପରକୁ। ଭାଇ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ରପ୍ ଲଗାଉଛି, ଏଇଠି ମୁଁ ଭଲ ଡିମାଣ୍ଡ ପାଇ, ମାନେ ଭଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଠି ଭଲ ମୁଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇପାରୁଛି, ତାପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଗ୍ରୋ କରିବେ। ଆହୁରି କ'ଣ, ଇନପୁଟ୍ କୋଷ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ମର କି ଇନପୁଟ୍ କୋଷ୍ଟ କ'ଣ, ସେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହଉ ହେଲା, ସିଡ୍ସ ହଉ, ଲେବରର କ'ଣ ଆଭେଲେବିଲିଟି ହଉ, ଏମିତି ନୁହଁ କି ତୁମେ କିଛି କ'ଣ, ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରପ୍କୁ ତୁମେ ଗ୍ରୋ କରୁଛ, ତୁମେ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଲେବର ବହୁତ ଦରକାର ହେଲା, ବିନା ଲେବର ହେବନି, ସେଇଠି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ନହେଲେ କାମ ହିଁ ହେବନି। ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ, ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି କି ଆମର କ୍ରପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା କେଉଁଠି ହେବ, ମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କ୍ରପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଆଉ କ'ଣ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲର କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଛି। କ'ଣ, ଯେମିତି MSP ଆଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପଲିସି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଅଛି ସେ ଏନକରେଜ୍ କରେ ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଟ୍କୁ ଅଧିକା ତୁମେ ଏଠି ଚାଷ କର। କ'ଣ ପାଇଁ, ଯଦି ଶୁଣିଥିବ ପଢ଼ିଥିବ RP ପାଇଁ କି ଆମର ଯେଉଁ MSP ଡିସାଇଡ୍ ହୁଏ ହେଲା, ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ଅଛି MSPରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି କି MSP ରେଟ୍ ତଳକୁ, ସପୋଜ MSP ଅଛି ଆମର କେତେ ନା, ଆମର ଅଛି କେଜି 30 ଟଙ୍କା, ତ 30 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଯଦି ଆସିଗଲା ମାର୍କେଟରେ, ମୁଁ ତୁମଠୁ କିଣିକି ନେବି ହେଲା। କ'ଣ, ଯଦି 30 ଟଙ୍କାରୁ ମାର୍କେଟଟା କମିଗଲା ସେ ରେଟ୍ଟା, ମୁଁ ତୁମଠୁ କିଣିବି। ବଟ୍ 30 ଟଙ୍କାରୁ ଯଦି ଉପରକୁ ପଳେଇଗଲା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତୁମଠୁ କିଣିବ ନାହିଁ। ତୁମ ପରିବା କି ତୁମ ଯାହା ବି ଅଛି ସେ MSP ଆଇଟମ୍ ଯାହା ବି ଚାଷ କରିଛ, ସେ ନଷ୍ଟ ହଉ କି ଯାହା ହଉ, MSP ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଭାଇ ବାଇଗଣ ଉପରେ କିଲୋ 25 ଟଙ୍କା ରଖିବି, ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା, କେତେ ରୁହେନି, ମାନେ 25ରୁ କମିଗଲା ମୁଁ ତୋଠୁ କିଣି ନେବି, 25 ଉପରକୁ ଗଲେ ତ ମାର୍କେଟରେ ବିକ, ଯାହା ବି ଯାଉ, ମୁଁ ନେବିନି। କିନ୍ତୁ ରାଇସ୍କୁ ହ୍ୱିଟ୍ କ୍ଷେତ୍ର ସେଇଆ ନୁହେଁ, ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଟ୍ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ନା, ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ରୁ ଅଧିକା ଥିଲେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟାକୁ ନିଏ, ଷ୍ଟୋର କରେ। ତ ଲୋକ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କି ଭାଇ ଯେଉଁ ପଲିସି ଅଛି ସେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି କ'ଣ ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଟ୍କୁ, ତ ସେ ଅଧିକା ୟାକୁ ତ ଗ୍ରୋ କରିବେ ନା ଭାଇ, ବୁଝିଲା। ତାମାନେ କ'ଣ କି ତୁମର MSP ଆଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପଲିସି, ମୋଟାମୋଟି ମୁଁ କହିବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପଲିସି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେ ଡିଟରମାଇନ୍ କରେ କି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ରପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଫଲୋ ହେବ। ସବସିଡି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ, ଏସବୁ ବେଶୀ ଜିନିଷ ହେଲା, ସବସିଡି ଦିଆହେଉଛି, ଦିଆହେଉନି, କେଉଁଠି ଦିଆହେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, ଲାଇକ୍ କ'ଣ
ଯେମିତିକି ହାଇ ଭେରାଇଲ୍ ସିଡ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା, ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ କର କି ଆମର କ'ଣ ଆମର ଆସିଥିଲା ଆମର ସରି ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ହେଲା, ଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆମେ ଆଣିଥିଲେ ଇରିଗେସନ୍ ଫାସିଲିଟି ସେ ଏରିଆରେ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା, ସେଇ ଏରିଆର କ'ଣ ଆଉ କହିବି କ'ଣ, ସେ ଏରିଆର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ତୁମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା କ'ଣ ଅଛି, ତମ ପାଖରେ କ'ଣ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ଫାସିଲିଟି କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କି ଏଇମାନେ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବେ କି ହଁ ଆମେ ଏଇ କ୍ରପ୍ଟାକୁ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ହିଁ କରିବାନି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଇକୋନୋମିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଲିସିର, ତାପରେ କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ହାଲାକି ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା କି? ତମେ ଯଦି 4-5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ତାହେଲେ ଚଳିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଛାଡ଼ିଲିଣି, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହିଦେଇଛି। ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି 15-20 ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପୁରେଇ ଦେଲି ନା, ତ ନିହାତି ଏକ୍ଜାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର 4-5ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତ ମନେ ରହିଯିବ କି ହଁ ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଡିଫାଇନ୍ କରିବେ କ'ଣ କି କୋଉ ଏରିଆରେ କୋଉ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କ୍ରପ୍ ହବ। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କ'ଣ, ୱେୟାର ହାଉସିଂ କ'ଣ ହେଲା, କୋଲ୍ଡ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କ'ଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଏରିଆରେ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମାର୍କେଟ ଆକ୍ସେସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ନା କି ତମେ ତମର ଚାଷ କରିଦେଲ କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ନାହିଁ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଅଛି କି ମାର୍କେଟ ଏମିତି ନାହିଁ, ତମେ କାହିଁ କରିଯିବ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇପାରୁନଥିବ ହେଲା, ତାକୁ ଠିକ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରି ହେଉନଥିବ। ଆଉ କ'ଣ କିଛି ସୋସିଆଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାଏ, ସୋସିଆଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାଏ କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଏରିଆରେ ଏଇ ଚାଷ ହେବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି, ଯେମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମ ପୁରା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେଇପଟେ ରାଇସ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କର ହାବିଟ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଫୁଡ୍ ହାବିଟ୍ ଅଛି ରାଇସ୍ ଖାଇବେ। ଯିବ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ତାଙ୍କର ହ୍ୱିଟ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ପଞ୍ଜାବରେ ରାଇସ୍ଟାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ପେଡିକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି ବିକଜ ତାଙ୍କର ସେଠି ଇକୋନୋମିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ ଦେଲା, ତାକୁ ସେଠି ପଇସା ମିଳିଗଲା, ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିଗଲା, ଏମ୍ଏସ୍ପି ତ ଭଲ ମିଳିଗଲା ପଞ୍ଜାବରେ। କିନ୍ତୁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ସେ ରାଇସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଖାଆନ୍ତି ବିକଜ ତାଙ୍କର ହାବିଟ୍ ସେଇଆ, ମୁଁ ରାଇସ୍ ଖାଇବି। ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ଏଇ ସବୁ ଆମର ହେଉଛି ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି କି କୋଉ ଟାଇପ୍ର କ୍ରପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ଏରିଆରେ ହେବ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଆମର କ'ଣ ଦେଇଥିଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟା, ସିଧା କଥା ହେଇଗଲା କି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରପ୍ସ ଗ୍ରୋନ୍ ଇନ୍ ଏ ରିଜନ୍, ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଓଭର ଏ ଗିଭେନ୍ ପିରିୟଡ଼, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ହଉ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ହଉ, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ହଉ, କୋଉ ଏରିଆରେ କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର କ୍ରପ୍ କରାଯିବ। ତ ଏଇଟାର କ'ଣ ଗଲା ନା ଏଇଟା ଗଲା ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ୍ ଆଫେକ୍ଟିଂ ଟୁ କ୍ରପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଟାଇପ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମିକ୍ସ କ୍ରପିଂ, ଇଣ୍ଟରକ୍ରପିଂ, ରିଲେ କ୍ରପିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ରପ୍ ରୋଟେସନ୍। ଚାରିଟା ବୁଝି ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଇଜି। ତୁମର ପ୍ରି ପାଇଁ ଯାହା ଥିଲା ସେତିକି ଦରକାର ଥିଲା ବାସ୍। ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ୍ ଆଫେକ୍ଟିଂଟା ତୁମର ପ୍ରି ନୁହଁ, ତୁମର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମେନ୍ର ନୋଟ୍ ହେଲା, ଇଏ ତ ପ୍ରି ପାଇଁ ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତୁମର ମେନ୍ ପାଇଁ। ଓକେ, ଆଉ ହଁ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ନା ଇଏ ଗୋଟେ କିୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖିବ ନା କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍। ତା ମାନେ କ'ଣ କି ଦେଖ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି କି ତୁମେ ଯଦି ମନ କ୍ରପ୍ କରୁଛ ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ତୁମେ କ୍ରପ୍କୁ କରୁଛ ହେଲା, ଯେମିତିକି ଇଏ ତ ଖାଲି ରାଇସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଖାଲି ହ୍ୱିଟ୍ ହଉ, ତୁମେ ଖାଲି କରୁଛ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ତାମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ କି ଏଇଠି ଯେଉଁ ମଲ୍ଟି ଭେରାଇଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଅଛି, ସେ ମିଳିବ କି? ପସିବଲ୍ ନୁହଁ। ଯଦି ମିଳିବନି ଦେନ୍ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆମର ଆସିଲା ପିଆଇକ୍ୟୁରେ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେଲା, ସେ ହେଇଯାଏ। ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ଆଗକୁ ହେଲା ଆନସାରିଂ କରିବା, ତ କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ହେଲା ଏଠି ସବୁଠି ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ରେ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ମନେ ରଖିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ମିକ୍ସ ଫାର୍ମିଂ, ଆମେ ସବୁ କିଛି ମିଶେଇକି ଫାର୍ମିଂ କରିବା ହେଲା। ବାକି 45 ମିନିଟ୍ସ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଥିଲା। ଓକେ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯଦି ଆପଣ ବେସିକ୍ଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବିଲ୍ଟ ଅଛି ନା, ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଲେକ୍ଚର ଆସିବ ସେଇଠି କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲେଭେଲରେ ଯିବା। ଓକେ, ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଲେକ୍ଚର ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେବ, ସେଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇଠି ଆମେ ଟୋଟାଲି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲେକ୍ଚରକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଓକେ, 2ଟା ଲେକ୍ଚରରେ ହେଇଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ 2ଟା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ନା ଆମର PYକୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପାଖାପାଖି 12-13 କରିଦେଲେ ଆମର କାମ ହେଇଯିବ। ଓକେ।